थैंक यू। वेलकम। ऑल राइट, नमस्ते रुचिरा जी, आपका हमारे शो पे बहुत दिल से स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि आपसे आज हम गुफ्तगू करें और सीखें कि सुरक्षित ऑफिस वापसी के क्या पर्सपेक्टिव है, क्या मूल मंत्र होने चाहिए और काफी चीजें। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एंड Thank you, Diksha. Thank you so much. Pleasure is all mine. यू। ऑल राइट रुचिरा जी, तो हमें थोड़ा बताइए ब्रीफ में कि व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट सिचुएशन। जो हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव आ चुका है, ऑफिस में लोग में एप्रीहेंशन है, whether they want to go out, they don't want to go out. What's the current situation आपके नजरिए से? Over to you रुचिरा जी। Thank you, Diksha. काफी mixed response है इस time. I think there is a set of people who are now done and they can't sit at home anymore and they are rearing to go out, which is why we see so much of like what we call revenge travel and everybody is going out. On the other hand, there is a lot of introspection और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं या वापस ऑफिस नहीं आना चाहते हैं क्योंकि they are still skeptical. Even about the vaccination, not everybody is as welcoming towards vaccination because they're still being tested and so on. So एक mixed response है, anxiety है system में अभी भी. Not everybody is completely ready to get back to the normal, but there is a new normal. So अब वो भी देखने की बात है कि आगे कैसे चलेगा काम. यस एब्सोल्युटली रुचिरा जी, आपने सही बताया कि लोग अंदर नहीं बैठ रहे हैं। दे वांटेड टू कम बैक टू places and go around and meet people, that's important. और डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो तो वो तो अलग बात हो जाती है। बट वेल सेड रुचिरा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमें बताइए कि किस प्रकार की पॉलिसी या प्रोसीजर होने चाहिए। सबसे पहले पॉलिसी प्रोसीजर से पहले हम लोग आते हैं कि आपको क्या लगता है वर्क फ्रॉम होम के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, and why everybody should go to office. Not exactly like 100% occupancy, but yes, of course, थोड़े थोड़े टुकड़ों में हम जा सकते हैं। तो over to you रुचिरा जी, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, before I start with the pros and cons of working from home, one of the things is we are humans and we are driven by choice. We don't like if we are forced to do anything for a long period of time. So work from home जब नहीं था तो लोगों को उसकी इंतजार था और जब अब हो गया है तो अब वो अच्छा नहीं लग रहा है because continuously forceful work from home है. What people are really looking for and what organizations are looking for is more flexibility where people have a choice to work from home but also come back to office, and that's what I envisage as the future of work. That's how the workplaces are also going to be. We don't envisage, especially in the technology sector, people to come back 100% and work completely from office as they were. The technology sector was always a little ahead in working from home. There was more flexibility, but अब शायद वो और ज़्यादा होगी. Um, लोग बिल्कुल भी लोग भी यही चाहते हैं, दे वांट दैट चॉइस. वो मिस कर रहे हैं वो कनेक्शन. सो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम में जैसे प्रोज ये है कि भाई यू कैन मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स टुगेदर. You don't have to take a time off every time you have to do. For people who live very far away from the office, the commute time has come down, which has enhanced their productivity. And then we can also distribute talent. We don't have to go and hire in the same places forever, especially for women who had to drop out of the workforce sometimes because they couldn't get out of home. They are now, they can get back into the workforce because they can work from home. Cons, of course, there are like the profession has invaded the boundaries of the personal space. So घर में हर किसी के पास वो जगह नहीं होती है. There are shared spaces where people are living together. So of course distractions होते हैं. आपका प्रेजेंटेशन होगा, उसी समय घंटी बजेगी, उसी समय प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी. So all those are challenges of working from home, and more than anything people are missing the connection. Meeting people who they usually don't work with. Zoom है लेकिन आप जिनके संग काम नहीं करते उनसे मुलाकात नहीं होती. So they are missing those relationships and they are missing connections, and which is why they want to come back to the workplace to collaborate, to meet each other more, not so much of sit at their desk in the office and work. Over to you, Diksha. Yeah, thank you so much रुचिरा, काफी अच्छा इंसाइट दिया. When you talk about we are social people, we love to go out, meet people, we are missing connection though. However, घर से बैठ के काम करना मजबूरी था एक पॉइंट पे, जहाँ पे हमने 1.5 साल घर से काम किया है. बट नाउ आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक स्टेप, इवन 10%, 20%, बट विलिंगनेस पे हम लोग एम्प्लॉइज को वापस बुला सकते हैं. वंडरफुल सेड रुचिरा. तो यहाँ पे जिसके घर में छोटे बच्चे हैं एंड दे हैव ओनली वन वैक्सीनेशन,
They got only one dose. उस point पे, yes, उस point पे, what do you think is the right measure for the organization to manage kids as well as the parents? So over to you, Ruchira. What's your take on it? See, right now, obviously, there is no vaccination for the kids, so organizations can't force it. Many organizations haven't even opened up their offices yet because they're giving the people that time to get their doses. As long as majority of the workforce has had it, they will find it convenient. It's not so much of the organization forcing it to people to take vaccination, but if people like us have to go back into office and or anywhere in a crowded place, we would like everybody else around us to be vaccinated. So it's a little bit of like a community responsibility versus an organizational responsibility कि vaccine लगवानी है. That is the only way we can protect ourselves and our families. Or बाकी, avoiding the risk, like if you have children at home, then even more, because if you're going out and then coming back, then it's even more important for us to be vaccinated so that we don't kind of become carriers, and we may be better off, but our children will not be able to deal with it, right? So ऑर्गेनाइजेशंस हैव मिक्स्ड पॉलिसीज. अभी तक कोई ऐसा मैंडेट शुरू नहीं किया है. काफी कंट्रीज में इस गवर्नमेंट्स ने ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दी है टू मैंडेट vaccination. We don't have anything like that yet, but most probably it's more of, I would say, instead of an organizational policy, it's a community responsibility. Well said, Ruchira ji. I think हमारे पास वो मैंडेट नहीं है जैसे विदेशों में है, but हम लोग थोड़ा अलग ही काम करते हैं. The way we work, we are very cultural, social person, and we work and get interacted with people like a family. I think तो वहां पे मैंडेट हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने परिवार को मद्देनजर रखते हुए. Wonderful said, रुचिरा जी. आगे बढ़ते हैं. What kind of tools and technologies that you think जिसकी मदद से हम लोग complete contactless या हम लोग टचलेस जा सकते हैं? अगर दीक्षा आती है, बैक टू ऑफिस जाती है, तो हम नॉब को टच ना करें, हम कॉफी मशीन्स को टच ना करें, एंड सो फोर्थ, राइट? तो क्या आपका विचार है व्हेन यू वांट टू मेक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट टचलेस? ओवर टू यू, रुचिरा जी. देखिए, आजकल के वर्क प्लेस में it is quite contactless when it comes to some of these facilities, right? Like the doors don't have knobs, they are photosensitive doors, they open on their own. In the work coffee machines, you can always use disposable cups and so on, so there is very little touch there. Most of them are actually digital, more screens and so on. You can always have something to touch the screen. But we also have to look for other ways of working which are very deep rooted in our country. For instance, we do a lot of paperwork as a result. So वो paper हम currency को तो रोक देंगे, but वो letter जो 10 हाथों में जाता है, somebody signs it. Stationery is a big carrier. I think we have made a big movement of going digital over the last 1.5 years, and many of the traditional industries which were not into digital experiences have also moved to digital. Letters that are documents are now accepted in PDF format, in digital format. तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना पड़ेगा कि every process that we are doing, it's not just about the infrastructure in the office where people are sitting or eating, but it's also about the way we do our work that has to continue into this digital format, so we don't have to touch things and we maintain less contact. थोड़ी बहुत community living भी हमारी बदलेगी, because we have like lunch hours were always congregations and everybody would sit together and eat together, but now there will be social distancing, there will be some spaces created in between, so those parameters will change a bit, but those are much more easier manageable processes than the mindset of I have to change the way I work and I want to go virtual completely. One of the biggest changes we want to make is really around thinking virtual first, because if we apply flexibility and some people will work from home and some people will work from office, तो वो वाला माहौल जो होता है कि सब एक संग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं या एक संग क्लासरूम में ट्रेनिंग कर रहे हैं and the conversation is in the room, that now has to be thought of virtual first. So the lowest common denominator is the virtual person. So हर चीज में हमें पहले virtual सोचना पड़ेगा, और that is a big reorientation for organizations and for employees. या आप ऑफिस में हैं फिर भी कोई घर पे है, and vice versa, that if people who are working from home, to remember that there are people sitting in the room, so sensitivity has to be on both sides.
Absolutely. Reimagine, restructuring is the next thing that we look up to, and the HRs and the all the leaders, FM HRs are उनके उनके पाले में है कि आप काम करके हमें दें, आप बताएं कि किस प्रकार की पॉलिसी प्रोसीजर, क्या नियमों का हमें पालन करना है और ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है. बट एक चीज से मैं जरूर इत्तेफाक रखूंगी रुचिरा जी, जहाँ पे आपने बोला केक और सेलिब्रेशंस, राइट? सो रुचिरा जी, मैं एक चीज से इत्तेफाक रखूंगी, जब आपने केक की बात की तो हम अब बर्थडे सेलिब्रेशन में केक एक दूसरे के फेस पे नहीं लगा सकते. हमें सोशल डिस्टेंस फिर भी मेंटेन करना होगा. बट हाँ, ये एक दौर है, इसका ये कोविड हमारे साथ ही रहेगा. हमें बस वैक्सीनेट होना है, पूरी तरीके से वैक्सीनेट होना है, और सावधानी से डिस्टेंस बना के रखना है, दूरी बना के रखना है, ताकि हम एक दूसरे को बचा सके. बर्थडे तो हम मनाएंगे जब हम बचेंगे. सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. ग्रेट ग्रेट रुचिरा जी, शुक्रिया, आपने काफी इंसाइट्स दिया. चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ. तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का हमारा फ्यूचर ऑफ वर्क है? व्हेन यू सी कि ट्रेडिशनल कर रहे हैं, कुछ लोग हाइब्रिड कर रहे हैं, कुछ लोग को-वर्किंग से कर रहे हैं, एंड पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम. सो मिक्स कल्चर चल रहा है. तो आपके नजरिए में एज अ लीडर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वर्क looks like? Over to you, Ruchira. I think the future of work is a hybrid model. Well, some kind of professions are such that traditionally they need people to work in a certain setup, like in a factory setup and so on, but they will change the way they work in terms of the social interaction that people have. However, for most of us, and we have actually shown the world that we can, right? Like the minds have come together to think of overnight when we all started working from home, that there is possibility. ऐसा नहीं हुआ कि सारा काम रुक गया. So hybrid is the future of work, and the future of workplace. घर बड़े हो जाएंगे, थोड़े offices छोटे हो जाएंगे. Everybody will need a little bit of space in their homes to, if they are choosing to work from home, then they will have to create that workplace. तो वो और organizations को, as I said, mindset अपना change करना पड़ेगा, because we have been in a very traditional way thinking about हर जगह कोई ना कोई होगा ये काम करने के लिए, and now we have to think about the process running itself versus always thinking about a person dependence. So technology ka adaptation बहुत ज़्यादा होगा. That is what I see as the future of work in everything. It's not just about how big offices or workplaces are working, but even the small, like even shopkeepers will start thinking of digital payments first, right? Today, you go to the market and even the fruit and vegetable sellers are all taking digital payments. So that is the future of work. I think digital is the way to go. बिल्कुल, मैं आपके बातों से इत्तेफाक रखती हूँ रुचिरा जी. आई थिंक डिजिटल ही है. धीरे धीरे अडेप्शन भी होगा, धीरे धीरे हम सब चीजों को अपना लेंगे. जिस तरीके से हमने कोविड पे विजय पाई है, पा रहे हैं, काफी लोगों को हमने खोया है, which is unfortunate, but I think we as humans are very capable of doing anything in the world. So that's something that people should keep. चलिए रुचिरा जी, इसी के साथ आपने हमें काफी अच्छी अच्छी बातें बताई है, पॉलिसीज बताया, और कैसे हमें एम्प्लॉइज के हित में चीजें सोचकर उनके लिए काम करना चाहिए. तो यहाँ पे काफी लोग, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो काफी कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी उन्हें लगता है यार बहुत ज्यादा बर्डन है लाइफ में. व्हेन वी डू जूम कॉल्स एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कैमरा फ्रेंडली, और दे रियली डोंट वांट टू. जूम फटीग होता है. तो आप उन सभी को एक लास्ट मैसेज देना चाहें, दिल से वाला मैसेज, जो उन्हें इंस्पायर और एंथुजियाज्म से भर दे. सो ओवर टू यू रुचिरा जी, योर लास्ट वर्ड. Bilkul. I think the message is that there is always a silver lining in the cloud. I know we were all forced into working in a certain way and we were not ready for it. But we came together, our minds came together, and we found out solutions to continue living. And we are, hopefully, all of us are here and will continue to be there for a long time. तो basically help each other out. हमने दिखाया है कि हम कर सकते हैं एक साथ मिलके solutions. So help each other out, and more than anything, care for yourself. मतलब हम घर से काम कर रहे हैं does not mean that we don't need that time off, because in the past our mindset has been that okay, only if I'm traveling I need time off. No, take the time for yourself. Sometimes do what I call like switch off devices. Don't work on multiple devices together. Virtual backgrounds का use करिए so that you're not very bothered about cleaning up your home every time you have to get onto a Zoom call. So care for yourself first. Use whatever technology options are there to the best of their abilities to help you.
and care for each other. That is what I will say, is that this phase has really shown the power of humanity, the power of coming together, and let's continue in that fashion, and we will definitely make a better world. I love the point when you said silver lining. Yes, of course it is. हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है एक दूसरों के लिए. बस हमें थोड़ा और साहस रखना है, थोड़ा और हौसला जिंदा रखना है अपने में, और एक दूसरों की हेल्प करते जाने. और ये समय भी निकल जाएगा, अच्छा समय जरूर आएगा. थैंक यू सो मच रुचिरा जी, आपका बेहद दिल से स्वागत, आपका टाइम और बहुत सारी हंसी खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you so much, Diksha. Thank you. चलिए, जय हिंद, बाय. Jai Hind.